Hello officers and welcome to Happy Learners. In today's video, we are going to learn about how to fill an HWC performance chart at SDT portal. So मैंने अभी थोड़े दिन पहले शायद एक पोल्स डाला था जिसमें मैंने पूछा था आप लोगों से कि क्या आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए and this was one of the top requested videos. So today we are going to learn about how do we exactly fill this format and make the most out of this form to get 100% PBI. So I will request you guys to watch the video till the end, and even if there is any query, do let me know and I'll help you in this regard. So without any delay, let's just get started. Okay guys, so now you can see a page in front of you, that is the portal of स्वास्थ्य सेवा दुपुन. इसमें जाके हम लोग अपना जो है CHO मंथली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम को हम लोग ओपन करेंगे. तो अगर मैं यहाँ पे जूम करती हूँ, you can see it's written here HWC CHO performance monitoring system. So we'll click at this particular box and जिसके बाद हमारे पास ये पेज आ जाएगा, that is the login page. Now we will be logging in with our informations. Alright, so now we have a format. इसको हम लोग accordingly fill करेंगे and I'll say all the necessary things needed while for filling up this form. ठीक है. So first of all हम लोग अपना month जो है वो choose कर लेंगे. Now we'll be choosing our district and we'll also be choosing our block, sub center and other informations as well. ठीक है. Okay guys, so see अगर आप लोग एक बार से ज्यादा आप लोग अपना इन्फॉर्मेशन डालते हो तो आपके पास ये पेज आएगा. दिस सेज सिस्टम विल रिट्रीव प्रीवियस मंथ्स डाटा. सो इट इज अ गुड थिंग बिकॉज यू डोंट हैव टू फिल द फॉर्म अगेन एंड अगेन. जो भी कॉन्स्टेंट्स है वो आपका इमीडिएटली रिट्रीव होकर आ जाएगा. सो नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन द रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन. जैसे कि सबसे पहले है नंबर ऑफ विलेजेस, सो विल पुट दैट अकॉर्डिंगली. देन वी हैव पॉपुलेशन अंडर द हेल्थ इंस्टीट्यूशन. यहाँ पे हम लोग अपना टोटल पॉपुलेशन जो है वो लिखेंगे. Then we have annual target for pregnant women which will be writing. अगर आपको पता करना होगा कि ये कितना है आपका. ठीक है. Now we have date of submission. So date of submission you can अगर हम लोग मई का भर रहे हैं तो we'll be choosing a date from June. If we are filling up the form for the month of June, we'll be selecting the May of July. ठीक है. So now we'll be filling up for June. So हम लोग अभी डेट जो देंगे वो जुलाई का देंगे. ठीक है. So we'll just select a date यहाँ पे from July and then we'll move on. So now the next point that we have is population above 30 years. So there are two ways to write the population here. One, you can go through the survey of each and every ASHA and then give here the exact number of 30 years and above population, or you can multiply your total population with 37% and you'll get a number that you can write it here. ठीक है. So there are two ways you can give the numbers here. नेक्स्ट अप वी हैव एस्टिमेटेड इन्फेंट, जिसमें हम लोग एक एस्टिमेटेड नंबर लिखेंगे फॉर 0 to 1 years ऑफ एज, यानी कि न्यू बॉर्न जो चिल्ड्रन है. बिकॉज वी हैव अ टारगेट पॉपुलेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, सो विल हैव अ टारगेट एस्टिमेशन ऑफ इन्फेंट्स. Okay, so we will move to the next one. Because of some problems, there might be these white pages, but if you zoom in and zoom out, you'll get the data here. Now we'll be talking about the manpower. So for manpower, first point that we have is number of ANM. Let's click at the get ANM data, and after that we get the list. So here we are supposed to select everything because it is in the system and we are not supposed to leave any of them. ठीक है. So after you have selected click this box, you'll get a statement written here, your data has been successfully saved, right? So after you have this statement, you will scroll towards the right and यहाँ पे आप close पे click करोगे. We'll get back here. See, we have now number of ANM 3. Next up we have number of MPW. So फिलहाल I have only ANMs, no MPW. So we'll be writing here 0. Next up we have number of ASHAs. Same again, we'll be clicking at get data and we'll be searching the name of our ANM from this list. यहाँ पे आपको जो भी green color में नाम दिख रहे हैं, the names that you see in green color are the name of your ASHA. So you're supposed to search these names and tick on the boxes of your ASHA. ठीक है. Now after we have done clicking on every names of your ASHA, you'll select this green box that states include selected ASHA. Okay, now we will close by scrolling it to the right. Okay, so now after this is done, see now we can have this list of ASHA. यहाँ पे आपके सारे ASHA के नाम होंगे. Okay, next up we have CHO's employment number and name of CHO. This will be filled after you have joined. आपका एक employment ID होगा and you'll have your name selected in this list as well. Okay,
नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी द अदर इन्फॉर्मेशन. सो यहाँ पे आपके सारे एएनएम्स एंड आशा के इन्फॉर्मेशन होंगे यहाँ पे, एनएचएम आईडी वगैरह जो भी है, यू विल हैव इट हियर. नेक्स्ट अप वी हैव द नेक्स्ट फॉर्म दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ यहाँ पे यस नो का कॉलम है, you'll have to select yes no for given options. First up we have government buildings. So most of the CHOs आपने मुझे बोला है कि you have a rented building, you don't have a government building, you have a one room structure infrastructure, ठीक है. So for those people who don't have a government building will select no, and for the rest of them will select yes. Now every subcenter doesn't have a labor room, or every HWC doesn't have a labor room, so you will be selecting here according to your options or your arrangements. Okay. Next up we have CHO cubicle, electricity, water source, power backup, that is inverter or generator. ठीक है, तो अब based on the availability you will be selecting these options. Next up we have CHO quarters. So if there is a CHO quarter, you're supposed to select yes. If there is no availability of CHO quarters, then it's okay with no. Same with A&M quarter. Okay. So next up we have another page. Okay, this is here. Now we are going to select the equipments. ठीक है. First up is delivery table. So if you have a delivery table at your HWC, whether it be purchased or it be given by supply, you can tick available if you have one. ठीक है. Next up we are supposed to choose whether it is functional or non-functional. So you can choose this according to your equipments or according to the condition of your equipments. इसके बाद जो option है वो है delivery equipments. So yeah, again available, not available, functional, not functional. ठीक है. If it is not available, then you can never click functional or non-functional. It has to be available first and then functional and non-functional. ठीक है. इसके बाद आता है autoclave and sterilizer. Next up we have BP apparatus, then radiant warmer, digital hemoglobinometer, glucometer, everything that you have at your HWC, you're supposed to tick available for the presence of it, and if it is not present, you're supposed to click non-available. ठीक है, या फिर not available. Okay, so next up is training, capacity building, etc. Now you will be asked questions based on your training. Okay, so सबसे पहले जो most important training है is SBA training. Now there are boxes, so you can click on every boxes. Okay, if the CHO is trained, you will click on CHO, so you get the tick. If it is not trained, you will leave it like this. ठीक है, with no tick mark. Okay, so यहाँ पे सबको ट्रेनिंग मिली है अगर, तो आप सबके बॉक्सेस पे क्लिक करोगे. Same here, NSS के training. If you have received the training, you will click for yourself. If your A&M has received, you have clicked for them all as well. ठीक है. Next up we have IUCD training. So accordingly, you're just supposed to click for the person who are already trained. So yeah. इसके बाद last but not the least, it is NCD training, and that's how we end the training part. Okay guys, so now we have the community outreach and social mobilization. So first point that we have is whether HWC monthly meeting is held or not. So अगर आपने meeting किया है तो आप yes लिखो, अगर नहीं किया है then you have to tick the no box. ठीक है, तो usually you should always tick on the yes box. Next up we have number of VHND sessions, यानी कितने sessions planned किए गए थे, number of sessions that you have planned. So it should be according to the number of your ASHA. For example, you have 6 ASHA, so generally you should be holding 6 VHSNC sessions. If it is less, according to आपका जो भी format है उसमें से आपको लिखना है यहाँ पे. Then अगर planned किए गए हैं, then you should be attending the same number of VHND sessions. Next up we have number of VHND sessions held, so that should be 4 again because मैंने ऊपर 4 डाला है. Next up we have number of VHND sessions attended by CHO. So for me it's a little less number, 4 can be attended, so you can write 4. If you have not attended 4 of them, then you can write 2 at least. So 2 is the minimum number. 50% आपको ज्वाइन करना चाहिए. You should at least attend half of the VHND sessions. ठीक है, or at least 2 in a month. If you have too many villages, you can at least try to opt for joining 2 VHND sessions every month. ठीक है. Next up we have VHND sessions attended by A&M and MPW. So according to their attendance, you can just put it here. इसके बाद है नंबर ऑफ VHND सेशंस अटेंडेड बाय आशा, तो आप इसमें भी उसके हिसाब से आप डाल सकते हो. देन वी हैव इज द मंथली VHSNC हेल्ड.
VHSNC का मतलब है Village Health and Sanitation Committee. So if you have attended the monthly VHSNC committee meeting, you are supposed to write yes, or if you have held it, you have to write yes. ठीक है. The number of VHSNC committee meeting held during the month. So this should be again according to the number of your ashas. So if you have 6 asha in different villages, then you are supposed to write 6 VHSNC meeting. Then number of VHSNC meeting attended by CHO. This again you should at least try to opt for all of them, because PBI में दिया गया है that you have to attend 100% of it. अगर आपके यहाँ पे criteria कम है then it's okay. So do check your PBI before writing the number here. ठीक है. The number of VHSNC meeting attended by ANM and MPW. Next up we have number of VHSNC meeting attended by ASHA. So सबके नंबर आपको लिखने हैं. टोटल नंबर क्या है वो सबसे ऊपर रहेगा, जितना हेल्ड किया गया है मीटिंग उसमें से कितना CHO ने अटेंड किया, हाउ मेनी ऑफ देम हैव बीन अटेंडेड बाय ANM एंड हाउ मेनी हैव बीन अटेंडेड बाय आशा, दैट यू हैव टू राइट. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव टोटल पॉपुलेशन इन्यूमरेशन. नाउ पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का मतलब है हेड काउंट करना, घर घर जाके यू हैव टू काउंट द नेम ऑफ द पीपल, दैट इज यूजुअली डन बाय आशा. ठीक है. सो फॉर NCD स्क्रीनिंग यू आर सपोज्ड टू विजिट एवरी हाउस एंड सी हाउ मेनी 30 years and above patient are there. That is called population enumeration. So what happens is that you are not supposed to do the enumeration once at a time, like एक बार में ही सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. You are supposed to divide it among months. You can practically do it in once. Okay, एक बार में ही आपने साल के शुरुआत में आपने ये कर दिया है, कोई बात नहीं. You can just write in the form according to month wise. So यहाँ पे मैंने 200 दिया है because my generally my targets are 200 to 250. So I have given here 200 that my ASHA have calculated about 200 people that, and this includes all of my ASHA. इसके बाद आप लिखेंगे टोटल CBAC फॉर्म फिलअप. नाउ CBAC फॉर्म इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी आशा ऑफ योर्स. फॉर एग्जाम्पल वन of your ASHA has submitted 50 CBACs, another one has submitted 54, another have submitted 36. So you will calculate all these CBAC forms, the number of CBAC forms, and then you'll write the number here. ठीक है. Next up we have reproductive health services. So here basically we'll be talking about the family planning services that we have. सबसे पहले we have number of eligible couples that we have a register. We should always have an eligible couple register. So जिसमें से आपको ये डाटा निकालना है. ये हर साल चेंज होता रहता है, but it remains same for every month. After 6 months you are supposed to check this and correct the differences. ठीक है. तो यहाँ पे आपको नंबर लिखना है. Then number of eligible couple EC means number of eligible couple updated in RCH register, that you are supposed to write same. ऊपर आपका जितना भी eligible couple है नीचे भी आप यहाँ पे same ही लिखोगे. Okay. Then we have number of beneficiaries counseled for family planning services. कितने लोगों को हमने फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के लिए काउंसिल किया है, तो यहाँ पे मैंने रफली एक नंबर लिखा है, दैट इज 100. बिकॉज जनरली व्हेन वी ऑर्गेनाइज सास बहू सम्मेलन, वी ऑर्गेनाइज अदर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, इट इज नियरली 100 कैलकुलेटिंग ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन्स, ऑल द लैक्टेटिंग मदर्स, देन वी हैव मदर इन लॉज अलॉन्ग विद देम. सो इट इज नियरली ऑफ दिस रेंज. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज नंबर ऑफ CC डिस्ट्रीब्यूटेड. CC स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डम. ठीक है. तो कितने सारे पीसेस आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं या फिर आपके आशा ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो आपको लिखना है यहाँ पे. नेक्स्ट अप वी हैव नंबर ऑफ OCP, दैट इज oral contraceptive pill. That also you have to write it here by counting. You have to write it based on your distribution by ASHA and along with your ANM as well. Then इसके बाद यहाँ पे दिया गया है number of women mobilized for IUCD. So कितने लोगों को convince करके IUCD insertion के लिए सब सेंटर पे बुलाया गया, that is the number that you put here. How many women have you mobilized or your ASHA has mobilized from the field area to the sub center to continue with the process of IUCD. So that number you are supposed to write. Out of them, how many women did get the IUCD insertion, that you are supposed to write on the next point. ठीक है. Next up we have maternal services, maternal health services. So this is our main data that we are supposed to put for every month. Number first we have number of pregnant women registered. कितने सारे लोगों ने registration किया. Then we have number of pregnant women registered within first trimester. This is an important point because आपका एक PBI indicator इस पे भी होता है कि how many early registrations that we got. So we have to score above 80% here. So your main target here is that the number of pregnant women who registered should all register within first trimester, that is within 12 weeks. ठीक है. जितना आपका यहाँ पे ये नंबर कम होगा उतने आपके PBI के चांसेस कम है. ओके.
Then we have full ANC and HB test. Now full ANC and HB test का मतलब है how many ANC have you conducted and the number of tests that you have conducted. So यहाँ पे ये wrong है, यहाँ पे ऊपर में होना चाहिए. Full ANC का मतलब है first ANC plus second ANC plus third ANC plus fourth ANC. Okay, so you're supposed to add all your ANCs and then you're supposed to count the number of HB tests that you did for each ANC and write the number. Usually ऊपर का and नीचे का जो ये दो पॉइंट है full ANC and HB test and नीचे है number of HB test conducted during any ANC, this should be same. ठीक है. Then we have number of pregnant women who received any ANC during the month. That should again be same for the above number, that every pregnant woman who were given ANC should be registered. ठीक है. Next up we have number of pregnant women due for fourth ANC. कितने लोगों को फोर्थ ANC मिलनी है, ये आप कहाँ से देखोगे? वेयर आर यू गोइंग टू फाइंड दिस डाटा? सो यू विल गेट दिस फ्रॉम योर RCH रजिस्टर. RCH रजिस्टर में जितने भी सारे प्रेग्नेंट वुमेन हैं आप सभी को चेक करोगे एंड यू विल फाइंड आउट हु आर प्लान टू हैव फोर्थ ANC ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मंथ एंड राइट द नंबर हियर एंड देन यू आर गोइंग टू राइट द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन who received fourth ANC, who actually received fourth ANC. Now according to rule आपका for due वाला जो कॉलम है and who received वाला जो कॉलम है वो दोनों सेम होना चाहिए. ठीक है. Now सबको तो fourth ANC मिल चुकी है. Next point that we have number of pregnant women detected with high risk pregnancy. ठीक है. कितने लोगों को आपने डिटेक्ट किया that have high risk in their pregnancy or during their pregnancy. Then you are supposed to write number of high risk pregnant women being followed up. So ऊपर का जो आप नंबर दोगे और नीचे का जो आप नंबर दोगे वो दोनों सेम होने चाहिए. ठीक है. Next up we have number of deliveries conducted at sub center by the CHO. Now if your sub center has labor room and if you are trained in SBA, you are supposed to conduct the deliveries. So यहाँ पे अगर आपने डिलीवरी की है आपको उसका नंबर लिखना है. Next up we have number of deliveries conducted by ANM and you are supposed to write how many deliveries are conducted by your ANM. Then इसके बाद total deliveries conducted. Now this is based on the addition of you डूइंग द डिलीवरीज एंड योर ANM डूइंग द डिलीवरीज. उस सब दोनों को आप ऐड करके यहाँ पे नीचे का कॉलम भरोगे. नेक्स्ट अप वी हैव नंबर ऑफ होम डिलीवरीज. ठीक है. सो आपको लिखना है कि कितने होम डिलीवरीज हुए हैं. ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे अभी भी people conduct home delivery, so you're supposed to have a record of that as well. ठीक है. Then we have number of delivery cases referred. जितना भी डिलीवरी आपने किया, the number of deliveries that you have done, how many of them were referred to higher facilities, वो यहाँ पे आपको लिखना है. ठीक है. Next up we have total number of registered children whose immunization was due for this month. फिर से आप अपना जो है RCH रजिस्टर देखोगे, उसमें से आप निकालोगे कि कितने लोगों को इस मंथ में इम्यूनाइजेशन मिलनी थी एंड देन द नंबर कम्स कि आप लोगों ने इस मंथ में कितने सारे लोगों को या फिर कितने सारे बच्चों को इम्यूनाइजेशन दी है. द अबव नंबर एंड द बिलो नंबर शुड बी सेम, बट अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट मंथ में इसको कवर अप कर सकते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन लास्ट 2 months. तो आप अगर जून का भर रहे हैं तो मई में कितने डिलीवरी हुए एंड जून में कितने डिलीवरी हुए, दैट इज सपोज टू ऐड एंड देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट कि लास्ट 2 months में कितने न्यू बॉर्न है. ठीक है. देन बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट और कैलकुलेट हाउ मेनी newborns are supposed to get HbA1c visit for this month and how many actually got the visit. तो ये दोनों जो नंबर है ये आपका सेम होना चाहिए. ठीक है. That's how you get percentage of newborn receive full HbA1c. You are supposed to calculate it that way. Then we have number of sick newborn referred. तो कितने सारे न्यूबॉर्न को रेफर किया गया है वो आप यहाँ पे लिखोगे. And then next point that we have is number of children who received full immunization. Full immunization मतलब 0 से 1 year तक का जितना भी immunization है, infant immunization उसको कहते हैं. तो कितने लोगों को full immunization मिली for this particular month you are supposed to write. Then we have number of diarrhea cases treated with ORS and zinc. For this particular data you can refer to IDSP register, you can refer to your IDSP mobile app, you can also refer to your OPD register जिसमें अगर आपने मार्क करके रखा हुआ है डायरिया या फिर IDSP पेशेंट को, it will be easy, यहाँ से आप निकाल के आप डाल सकते हो. Total number of diarrhea cases refer to higher facility. If there are any people who are hired to higher facility due to diarrhea, you are supposed to write it here. Then we have number of pneumonia cases treated. अगर आपने ट्रीटमेंट दी है तो आप यहाँ पे treated पे कॉलम पे लिखोगे. अगर आपने रेफर किया है, अटेंड करके केस को रेफर किया है, you are supposed to write in the next column that is total number of pneumonia cases added and attended and referred. Then we have total number of SAM cases, that is severely weak baby जो होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं
सैम बेबी, तो उनको हमने आइडेंटिफाई किया एंड रेफर किया, उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट अप वी हैव नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रिसीव फुल HbA1c विजिट, ठीक है। सो यहाँ पे ये लास्ट में क्यों दिया है, बिकॉज जनरली वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई सैम बेबी एंड सिक न्यूबॉर्न इन दिस कॉलम ड्यूरिंग आवर HbA1c विजिट, ठीक है। सो नाउ फाइनली वी आर अप टिल हियर इन आवर NCD सर्विस। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया गया है डायबिटीज स्क्रीन, आपने कितने पेशेंट को डायबिटीज के लिए स्क्रीन किया है उसका नंबर आप लिखोगे। देन among those how many of them are suspected and among that as well how many are referred, ठीक है, to higher facility। यहाँ पे ये 10 होना चाहिए because we have suspected 10 cases and will be sending the same number of patient to higher facility. It is their duty or their part to decide whether this patient has to start treatment or not, ठीक है। Now under regular treatment and follow up, so इसमें क्या होगा कि आपके पिछले मंथ के पेशेंट्स एंड देन प्रेजेंट मंथ के सस्पेक्टेड पेशेंट को मिलाकर जितने लोग ट्रीटमेंट में हैं उसका आप नाम लिखोगे या फिर उसका आप लोग फॉलो अप का नंबर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव हाइपरटेंशन। सो अगेन कितने लोगों को हमने स्क्रीन किया, कितने लोग सस्पेक्टेड आए एंड कितने लोगों को हमने हायर फैसिलिटी में भेजा है, ठीक है। एंड देन वी हैव hypertension under regular treatment. So the number of people who came for follow up and are under treatment, you will add this patient up and write this number here. Next up we have oral cancer. So this is basically same. अगर आपको कोई patients मिलते हैं तो आप इसमें लिखोगे। Next up we have breast cancer. तो this is basically the number only for females, ठीक है। तो जितने भी females हैं उनका आपने स्क्रीनिंग किया होगा तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। अगर सस्पेक्टेड केस है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देन रेफर पे भी आपको लिखना है एंड so on with the treatment. So now next up we have cervical cancer. Now for cervical cancer we don't do the screening. It is now prohibited to do cervical screening because we are not generally trained in this area and people are not accepting this as well, ठीक है। तो इसलिए we don't do cervical screening unless we have a doctor along with us, ठीक है। तो we are not supposed to continue this screening part. cervical को हम लोग skip करेंगे। नेक्स्ट अप वी हैव डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हियर, ठीक है, या फिर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज। सबसे पहले हमारा है HB एस्टिमेशन, तो इसमें हम लोग लिखेंगे अवेलेबल या नॉट अवेलेबल। देन वी हैव नंबर ऑफ HB टेस्ट एस्टिमेशन टेस्ट, तो कितने हमने किए हैं वो हम लोग लिखेंगे, टेस्ट कितना किया है वो हम लोग लिखेंगे। देन ये जो नंबर है मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको, आपका जितना भी ANC हुआ है, मान लीजिए first, second, third, fourth you have calculated and it is 50, so you are supposed to write 50 hemoglobin test. You are never supposed to write less or you are never supposed to do less, ठीक है। जितने भी ANC हुए हैं you are supposed to equal the HB test. Then we have urine for pregnancy, तो जितने भी registration है you can write the same number as your registration or you can write a bit more, ठीक है। Next up we have blood sugar. So now blood sugar में you will be calculating the number of screening that you did for NCD screening. For example, we did 160 in this form itself, and then here up we have 39 ANC. So ANC के टाइम में भी हम लोगों ने उनका blood sugar check किया होगा. So we will add this up. Blood sugar में screening for NCD plus screening for pregnant women, we will add this up and write it here. ठीक है. Next up we have urine for sugar and urine for albumin, which is supposed to be same with HB test. Then we have RDK, that is rapid kit for diarrhea. Malaria, sorry, rapid test kit for malaria, that you are supposed to write here कि कितने टेस्ट हमने किए हैं यहाँ पे, ठीक है। Next up we have stocks for drugs. Number of drugs available out of 19 as per EDL for HWC. So we have right now currently we have 31. The form is not been updated. The list EDL list is updated for us. So we have written 31. आपके यहाँ पे जितने भी हैं आप वहाँ पे लिख सकते हो. Any stock out, for example in my area telmisartan gets stock out very easily, Pentope gets stock out very easily, so I have written it here. Then is there any alternative medicine for this? If it is there I will write it in the box after clicking yes. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं. Then we have number of patients dispensed with drugs for diabetes and hypertension. We will refer our NCD medicine register. अगर आपने मेरे चैनल पे देखा है, we have a separate register for NCD medicine. We will count how many number of people have been given drugs for diabetes and hypertension and we'll be writing it in this column. Then we are supposed to write number of drugs available for diabetes, यानी कितने variety of drugs हैं for diabetes and then कितने variety of drug है for hypertension. मेरे यहाँ पे दो फॉर्मूले के हैं तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है. Next up we have the OPD calculations. So यहाँ पे आप देखें कॉलम है for CHO, then for ANM, for MPW and last but not least
टोटल, ठीक है। तो CHO के कॉलम में दो पार्ट्स हैं, OPD एंड स्क्रीनिंग। सो फॉर एवरीवन वी हैव दैट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया है अपने OPD पे, आई हैव रिटन 200 ऑफ OPD एंड 200 स्क्रीनिंग, and my total is 400 for A&M. Their OPD is 160, screening is 0, so it's 160 total. And then the last number that comes, आपको उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही कैलकुलेट कर लेता है, that is 560, ठीक है। So you are always supposed to maintain a number that will give you 100% PBI, ठीक है। तो this is how you fill up the form. Next up we have some other data that जैसे कि out of the OPD number of patients sent for sputum, this should be 3% of your screening, as I mentioned in my PBI. Okay, and out of the number that you sent for screening, if there is anyone who came out positive, ठीक है, वो भी आपको लिखना है। Then again there is another point, number of patient currently taking DOTS treatment. तो अगर आपके सेंटर से या फिर आपके ब्लॉक से कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, you are supposed to write the number here. Then next up we have number of TB cases completed treatment. Whoever complete the treatment उसका आपको यहाँ पे लिखना है। Last but not the least we have number of fever cases examined for malaria. तो यहाँ पे भी आपका अगर स्लाइड से या फिर किट से आपने टेस्टिंग किया है तो यहाँ पे आप उसका नंबर लिखोगे। आफ्टर वी हैव डन दिस ऑल वी विल सेव डाटा एंड एज सून एज हमारे पास यहाँ पे कुछ आता है, यहाँ पे लिख रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग बिकॉज आई रिकॉर्डेड द वीडियो इन हाफ, बट after you save the data you are supposed to get successfully uploaded and then only you are supposed to go back, ठीक है। So this is how you enter your monthly performance data for CHO. Okay, this was it for today's video. I hope कि आप लोग को सब कुछ समझ में आया. You got all through the points and there is no other confusion left with this portal itself या फिर with this form. If there is any query and if there is any point that I missed or is not present in my form, you can directly ask me in my Instagram. I will always reply you there. So yeah, for today it is the video, and if you are new at my channel, please do check out my playlist. If you are a CHO, there are 2 playlists that you can watch, or 3 playlists regarding CHO's word, CHO's shorts, and then there is another playlist regarding committees of CHO. So you can all watch all those videos and make the most out of it because I have documented everything during my process. So yeah, please enjoy my playlist and I'll prepare for the next one. Till then, happy learning and bye bye.